Good morning, student. I am Rajendra Singh Mori, your maths teacher from the Gyanmanjari Vidyapith Mahuva. Again, welcome to all of you in this class 8, and this is the maths lecture. And we will discuss here the unit number 2, and last also started the another unit number 1. So both of the units simultaneously going parallel. So one day is going for the unit number 2, and one day next day that the second lecture is going for the unit number 1. So be careful about that. Both of the lectures are different. So can't be both of the things you have to split in your fair book also. So without showing this all these things, whatever at the last lecture in unit number 1, that parts we going on in the last lecture of this unit number 2, that is the part of cube and cube roots. Already we discussed the cube and cube roots into the previous lecture. Today we will go about the learn about the estimating the cube root of a number. So how to estimate the cube roots of a number, that things we have to cover today. So be careful about that. This is the lecture of unit number 2. And what was the last lectures about into the last second one in Thursday, that is related with unit number 1. So be careful about that. Both things are simultaneously work in both chapters is going parallel for one day each. Okay, so today we will discuss about the unit number 2, and whatever the portion of last, that is the cube and cube roots. Now today we will learn about the estimating the cube roots of a number. So let us move on it. First one of these things is that how to estimate. Consider here that if we have learned how to find the cube roots of a number using prime factorization. लास्ट में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से उसका वीडियो एक देखा था और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखी थी. So we learn about how to find the cube roots of a number using the prime factorization. Now we use cube roots to do the following. So first thing is that to find the height of the length of a cube when the volume is given. हमें हाइट और लेंथ फाइंड करनी है जब हमें वो क्यूब का वॉल्यूम दिया जाता है. एंड सेकंड थिंग इज फाइंड द स्टार्टिंग वैल्यू व्हेन ए नंबर इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली. जब वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है तब हमें उसकी स्टार्टिंग वैल्यू फाइंड करनी है. सो व्हेन द क्यूब नंबर इज लार्ज, जब हमारे पास क्यूब नंबर लार्ज होता है, बड़ा होता है, दैट इट माइट टेक लॉन्गर टू फाइंड द क्यूब रूट्स. So we usually estimate the cube roots to get an approximate value. So let us see how to estimate the cube roots of a number. जब हमारे पास नंबर जो होता है वो इतना बड़ा होता है, so we can't be able to handle and convert into the prime factorization. That time we have to use another one method, that is estimating the cube root of a number. So let us see how to estimate the cube roots of a number. Let us move on it. Estimate the cube roots of 19683. ऐसा बड़ा नंबर आपके पास आया तो क्या करेंगे आप, कैसे उसका क्यूब रूट निकालेंगे. So just we have to check it out that estimating the cube roots of 19683. So first of these things, first steps is consider. You can simultaneously write in your book. First step is that make groups of 3 from the right. आप राइट साइड से 3 नंबर का एक ग्रुप बनाइए. मतलब 3, 8 और 6 को कंबाइन कर दो तो 3 का राइट साइड से मतलब इस साइड से 3, 8 और 6 का पहले एक ग्रुप बना दो. नाउ मेक ग्रुप ऑफ ए 3 फ्रॉम द राइट साइड से आप 3 का ग्रुप बना दो. बाकी जो बचता है वो 2 बचते हैं तो 2, 1 बचता है तो 1 का आप ग्रुप mention करो. Is it clear? So first step is clear. Now second one is that in this step number 1, again make a group of 3 from the right. 6, 8, 3 will give the ones place of the cube roots. आप देख सकते हो कि 6, 8, 3 में जो ones की place है उसका cube roots हम कहेंगे. मतलब 6, 8, 3 will gives the ones place the cube roots. So obviously we have to go for 6, 8, 3. Ones place is there. Now we are going for the step number 1 again. Second one जो group आपका 2 numbers का बना है वो 19 है. 19 will give the tens place of the cube roots. मतलब it gives us to the tens place of the
क्यूब रूट्स। पहला 3 का नंबर है वो आपको यूनिट्स प्लेस या वंस प्लेस के ऊपर क्यूब रूट्स देगा और बाकी का 19 है। सो लेट अस चेक इट। नाउ स्टेप नंबर 2 इज दैट एस्टिमेट द क्यूब रूट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। हम अब फर्स्ट ग्रुप का एस्टिमेशन कर रहे हैं 683 का। Here the ones place has the digit 3. हमारे ones की place पे कौन सी digit है 3. We know that 3 lies in the ones place of a cube numbers only when its cube roots ends in 7. हमें पता है 3 तभी ones place पे आता है जब इसका cube roots है वो 7 से ends होता हो। तो 3 को हम ऐसे कंसिडर कर रहे हैं, ये रूल हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। So what we'll do, therefore we can say that we get 7 in the ones place of the cube roots. मतलब 3 जब होता है तो उसके ones place पे cube root के 1 place पे क्या आएगा 7 आएगा। So 683 will give the ones place of the cube root is equal to 7 क्योंकि 3 लास्ट 1 place पे 3 है तो उसकी जगह पे cube roots हम करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा 7। Similar way we are going for the next second group. Estimate the cube roots of the second group, that is 19. 19 having lies between the cubes 8 and 27. 19 कहाँ पे लाइज होता है 8 और 27 के बीच में होगा ना, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। सो हुज क्यूब रूट्स आर 2 and 3 हुआ, तो 18 and 27 का क्यूब 2 और 3 हुआ। सो रिस्पेक्टिवली अंडर रूट 8 का क्यूब रूट्स होता है 2 और अंडर रूट 20 क्यूब रूट्स ऑफ 27 का होता है 3। तो 2 का क्यूब होता है 8 बट 8 का क्यूब रूट्स होता है 2, वाइस वर्सा। मैंने ये रूल भी आपको अगले लेक्चर्स में प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था। सो वी कैन से दैट cube root of 8 is greater than cube root of 19 is greater than cube root of 27. So we can say that here 2 cube root of 8 का मतलब होता है 2, cube root of 19 and cube root of 27 is 3. So obviously 2 और 3 के बीच में कौन सी चीज आई, cube root of 19. So we can say that here on taking the lower value we get 2 in the tens place of the cube roots. तो हम अब इसमें से जो छोटी 2 और 7 के बीच में 2 और 3 के बीच में जो चीज हमारे पास आई वो क्या है, लोअर उसमें से कौन है 2। So on taking the lower value we get 2 in the tens place of the cube roots. So we can finally we get here the 19 will give the tens place of the cube root is equal to 2. जैसे 683 का हमें मिला था 7, वैसे 19 का टेंस प्लेस हमें क्या मिला 2, क्योंकि 2 और 3 के बीच में कौन सी लोअर वैल्यू है दैट वी हैव टू कवर। तो ये हुआ आपका 2। सो अब दोनों को मिला दो, दैट इज योर स्टेप नंबर 4। So write the cube roots of 683. 683 will give the ones place of the cube root, that is 7, and 19 will give us the tens place value of the cube root, that is 2. So 2, 7, that is the roots of it. So the estimated cube roots of 19683 is 27. तो ये हुआ सिर्फ एस्टिमेशन, इट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब रूट्स ऑफ 19,683, but we have to estimating procedure over here, so we get here the 27 is there. Next one, another example. तो पहला जो एग्जाम्पल था स्टेप के साथ आपको आज लिख लेना है कि हाउ टू एस्टिमेट द क्यूब रूट्स ऑफ 19,682. Then after we go for the another one example, estimate the cube roots of 54872 is there. So that is the step number 1. Make groups of 3 from the right. 54872 का पहले हमें 3 का ग्रुप बना लेना है। स्टेप नंबर 2 में हम करेंगे एस्टिमेट द क्यूब रूट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप 872 है। इफ द क्यूब्स एंड्स इन 2 द क्यूब रूट्स विल एंड्स इन 8। हमें पता है कि 2 से एंड्स होता है तो उसका क्यूब रूट 8 से एंड होता होगा। सो 1 प्लेस पे हमें क्या रखना है 8। स्टेप नंबर 3 में हम जाएंगे एस्टिमेट द क्यूब रूट्स ऑफ द सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप आपका 54 है। 54 है वो हम कंसिडर करेंगे 27 का क्यूब रूट
54 का क्यूब रूट एंड 64 का क्यूब रूट। सो 27 का क्यूब रूट्स होगा 3 और 64 का होगा 4 और 3 और 4 के बीच में ये 54 क्यूब रूट्स आएगा। तो 3 और 4 में जो लोअर वैल्यू है वो हम कंसिडर करेंगे। ऑन टेकिंग द लोअर वैल्यू वी गेट 3 इन द tens place of the cube root, and then after we go for the step number 4, the estimated cube root of 54872 is 3 and 8. तो ये हुआ आपका estimation. This is your example number 2. You can also write down this book in your book and you have to send it as today's homework. Now this is for the how to find out or how to get the estimation of cube roots. Now we are going for the another one part. Now we are going for the practice question 6.3 and 6.4. 6.1 and 6.2 already we discussed into the previous lectures. So today we are going for the practice question 6.3 and 6.4. You can write down it into your fair book and then you have to send it as today's homework. So be careful about the today's homework. Whatever the estimation procedure we discussed into the earlier part of this video, that both examples you have to send it to today's homework and this 6.3 and 6.4 also. Now for the 6.3 का A portion हम consider करते हैं using prime factorization find the cube roots of 512. 512 को हम prime factorization से use करेंगे, मतलब 512 का prime factorization निकालेंगे like that way and then we will find out the cube roots of it. तो पहले का आंसर इस स्क्रीन पे मौजूद है. You can also write down these things A, B and C. इसमें से A यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. तो आपको पता है कि क्यूब रूट की बात हो रही है, तो क्यूब की बात हो रही है तो हमें 2 है उसकी पैर बनानी है 3 की. ओके, जब स्क्वायर रूट होता था तब हम 2 की पैर बनाते थे. अब क्यूब है तो 3 नंबर, सिमिलर 3 नंबर की हम पैर बनाएंगे. लाइक रेड लाइंस आपको दिख रही है, इट इंडिकेटिंग दैट इट हैविंग द पेयर ऑफ 3 नंबर्स. सो ये हुआ पूरा सॉल्यूशन ऑफ ए का. आप यहीं से लिख सकते हैं एंड इसकी और भी प्रैक्टिस आप कीजिए. सेकंड वन बी, बी का पोर्शन एंड सी का पोर्शन, ये तीनों तीन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है. प्रैक्टिस क्वेश्चन 6.3 का ए, बी एंड सी. So all these things you have to pause this video and you have to write down this all these things into directly in your fair book. ये fair book में लिख लेंगे then it will be very helpful for you. आज आपको होमवर्क में ये सब चीज़ ही सेंड करनी है, so be careful about it. तो ये हुआ प्रैक्टिस क्वेश्चन 6.3. नाउ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन 6.4 की बात करें जो आपको एस्टिमेशन से करना है, जो हमने अभी रिसेंटली आज ही लिया है. आज के वीडियो के बिगिनिंग पार्ट में हमने सीखा कि हाउ टू एस्टिमेटिंग द क्यूब रूट्स. तो उसके लिए आपको 3 क्वेश्चन दिए गए, 1728, 12167 एंड 32768. ये तीनों की चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसकी मेथड दी गई है जो हमने आज एक्सप्लेन की है. सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन फ्रॉम दिस वीडियो. तो फर्स्ट वन 1728 को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि एस्टिमेटेड क्यूब रूट ऑफ 1728 का आता है यहाँ पे 12. ओके, सो दैट्स वे वी हैव टू गो फॉर फर्दर. ए का पोर्शन हुआ ये आप लिख सकते हो, पोज करके भी लिख सकते हो. सेकंड वन 12167 का मिलता है 23, that is also be given over here. You can pause this video and write down all these things. And next one is considered for the C. So 32768, that is also be given over here. तो तीनों तीन क्वेश्चंस 6.4, 6.3 के ABC और 6.4 के ABC, ये 6 क्वेश्चन और 2 एस्टिमेशन के जो मैंने पहले बताए इसी वीडियो में, टोटल 8. तो ABC 6.3, 6.4 ABC and 2 estimated examples. So total you have to cover 8 questions in today's homework. So thank you very much for being with us. We conclude our session. Today we learn about only the estimated cube roots. So I hope that everybody understood these concepts, and if you having any kind of the query, just you ask me. Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you.